and I would like to request you and the indulgence of the House in terms of enunciating our plan to address this issue. Certainly, the steel sector is known as a hard-to-abate sector. However, we are not very far in terms of global averages, in terms of our emission numbers, as opposed to what the Honourable Member said. Our current average emission intensity is about 2.55 tons per CO2 per ton of crude steel, compared to about 1.95, which is the average in the world. However, we still have a way to go, and therefore we have put in place a short-term plan, a medium-term plan, and a long-term plan. The short-term plan really looks at reduction of carbon emissions through energy and resource efficiency, renewable energy. The medium-term plan, which is 2030 to 2047, looks at CCUS, which is carbon capture, utilization and storage, as well as usage of possibly green hydrogen, depending on technology innovations. And the long-term plan from 2047 to 2070 looks at a complete move over from ore-based and coal-based to much more technological innovations to come down to net zero as far as the world is concerned. I'd like to just inform the Honourable Member as well, if you look at this industry, you have to have in place supply-side drivers as well as demand-side drivers to bring down the level of emissions. As far as supply-side drivers are concerned, we've looked at energy efficiency and we've actually achieved a lot. From 2005 to 2022, we have brought down emissions by almost 15%, and our target is to cut it by another 10% by 2030. Because of the steps in this sector, the specific energy consumption has come down from 7 to 6.3 gigacalories per ton of crude steel produced. And the emission intensity also has come down from 3 to 2.55 in terms of the tons of CO2 compared to the total crude steel that is produced. We are also looking at renewable energy as a source, where we've looked at the National Solar Mission, where we hope to cut emissions by 20% by 2030. Resource efficiency is another area. Here we intend to use pellets, we intend to use scrap, we intend to use plastic as a raw material. All these three areas can bring about lowering of emissions. In fact, scrap can lower emissions by almost 85%. So that's another area that we are looking at tremendously. Today, India consumes 26 million tons of scrap. We import 4 million tons, so total 30 million tons of scrap are being used in India today to manufacture steel as we speak, which is roughly about 22.5% of our production. We're also looking at the possibility of green hydrogen when it becomes economically efficient to do so. Today, the prices are way above, as well as carbon capture and storage. On the demand side as well, sir, we are looking at two aspects. One is possibly government mandation of usage of green steel, because almost about 20% of our steel is used in government projects, and whether we can look at government mandation for a small amount of steel production. If we look at roughly 20% of a mandatory limit, I'm giving you an example, at a 30% price premium for green steel, the cost of projects will increase only by 1.26%. So this is an avenue that we're looking at. And finally, raising private demand, raising our awareness as a population, looking at branding green steel inside, eco-labeling, as well as looking at mandating the private sector and ESG rating benefits. Thank you. Thank you, Honours. Second supplementary. Thank you, sir. The Minister has very articulately put down what exactly the government is doing in that direction, and it's certainly very, very welcome. Sir, I would like to know whether the government also considers to have certain green guidelines for every plant in this behalf. Carbon capture you have already mentioned, but specific use of plastic waste to reduce the coal requirement, using solid waste which is generated as waste at the plants in roads and railway lines, like it's done in many foreign countries, recycling of water and the like, for an environmentally sustainable way of production that can be differentiated, sir, from other coals, so that the government and public sector can use it with a specific mandate till it comes into 100% the supply chain. Thank you, Vandana. Demand chain. Thank you. So again, a very good suggestion for action by the Honourable Member. And let me say this, that it's not easy to mandate a universal formula, if you will.
in terms of what is the input material that every plant you should use, because every plant has its own makeup. So for example, you have some plants based on electric arc furnace, you have other plants that are based on blast furnace or BOF, some that use DRI process with pulverized coal injection. So every plant has its own system. But certainly, as a category, we are looking at raw materials in terms of resource efficiency, and let me just give you a few examples. For example, if we look at the area of pellets and we use 100% pellets, you can almost reduce your CO2 emissions by 10 to 15%. That's example number one. Number two, if you look at scrap, as I mentioned, you can lower CO2 emissions by 85%, and as I mentioned to you, we are using 30 million tons of scrap today in India as we speak. We're one of the countries that are on the forefront of using so much scrap compared to the rest of the world. The third area is plastic, but that can be used as a mixture in terms of the process as opposed to the input. And the fourth, which is very important, is beneficiation of iron ore. If you beneficiate iron ore, if you have a 1% increase in Fe content, you can lower the coke requirement by almost about 1%. And if you lower coke requirement, then you lower CO2 emission as well. Thank you. Shri Anil Agrawal ji. क्या माननीय इस्पात मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में स्टील प्लांट से होने वाले टोटल एयर पोल्यूशन का कितना परसेंटेज स्टील प्लांट से है और इस एयर पोल्यूशन को कम करने के धन्यवाद। एक क्वेश्चन हो गया। माननीय मंत्री जी प्लीज बी ब्रीफ काइंडली, क्योंकि और क्वेश्चंस हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास टोटल एयर पोल्यूशन की क्वांटिफिकेशन नहीं है, पर पर्यावरण मंत्रालय UNFCCC को, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, हर 2 या 3 साल अपने आंकड़े सबमिट करते हैं। और जहाँ तक स्टील का विषय है, जो करीब 95 मिलियन टन CO2 का प्रोडक्शन था 2010 में, 2014 में 154 मिलियन टन तक गया और 2016 में ये 135 मिलियन टन तक गिरा है। थैंक यू। ऑनरेबल P. Wilson. Honorable Minister, this question may be a little bit different. To tell me what is the status of the Salem steel plant as the complete disinvestment has been taken place, and can you tell whether the valuation has been done and whether the job security of the existing employees has been taken care? Thank you. Yes, this question not Related addressed to Air question, India. but sir, I will try and answer the honourable member because I know it's of interest to him. Yes, I will certainly try and do that. Please. SSP is certainly slated for disinvestment. DPM of the Finance Ministry and my ministry are both, the Steel Ministry are working together on this. We have tried to take our investors to do due diligence and visit the plant. But unfortunately, I regret to inform the House that the state government has not been able to create that security environment for the due diligence by investors to take place. However, we have said that the financial bids and the bids should be submitted. I believe, don't hold me to this, but I think sometime in January. If I stand to be corrected, I will revert you. Honorable Shri Ayodhya Rami Reddy, nothing. Manya Ayodhya Rami Reddy. Sir, EU has recently released the carbon border adjustment mechanism, which directs that goods imported from a high polluting country will face a levy at the border based on its emission footprints. With the India exporting 20-25%, please be brief. Yeah, please. with India exporting 25% of their steel production to the EU, how will this impact our steel industry, and what steps the government is taking to address this issue? Thank you. Sir, as far as environment concerned, this is an issue that affects the steel industry worldwide. I am also pleased to report to the House through you, sir, that India has now reached a new record. We have become the second largest steel producer in the world in the last 8 years, doubling our capacity from 150 million to 154 million tons worth of production. We are very, very aware of the environmental concerns across the board. This affects producers all across the world, and which is why I have enunciated in this House a very clear articulation of both the supply side and the demand side plans that we have in place to reduce CO2 emissions in the steel sector, because without a doubt,
This is the way the world is going, and steel has to conform to that path of environmental protection. थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 122 माननीय संजीव अरोरा जी। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, उत्तर सभा पटेल पर रखा। फर्स्ट सप्लीमेंट्री माननीय संजीव जी। Sir, my फर्स्ट सप्लीमेंट्री पहला सवाल। Honorable Chairman, sir, I would like to ask Honorable Minister through you that how come Amritsar and Chandigarh airports were not pushed while signing agreements when everyone knows that maximum Indian population is from Punjab, especially in Canada, and the agreement was with Canadian. थैंक यू। Sir, I would like to respond to the honourable member who's asked the question, as well as the honourable member who raised this issue in 0R, Raghav Chadda ji. Let me be very clear, sir, that India has to look after her own interests. And the fact of the matter is that in the past governments, we have been way too liberal in terms of signing our air service agreements and giving multiple points of call to our neighbors very close to our geography. Whereas if you look at the situation today, sir, especially as far as Amritsar and Chandigarh are concerned, the honourable member in 0R also had raised, it's absolutely untrue, the statement that he has made. I'd like to place that in front of the House, that there is no connectivity in Amritsar, Chandigarh. I would like to inform him as well as the House that today we have connectivity, international connectivity from Amritsar and Chandigarh to almost 7 countries: United Kingdom, Qatar, Dubai, Malaysia, Sharjah, Singapore and Italy. As far as Amritsar is concerned, we have 17 air traffic movements per week internationally, specifically to Singapore, Doha and Kuala Lumpur, as well as to Tbilisi and to Malposa, Milano. As far as our domestic carriers are concerned, we have 42 air traffic movements internationally in Amritsar and Chandigarh together. 33 in Amritsar, 9 in Chandigarh, connected to London, Birmingham, Dubai, Sharjah, Rome and even Bergamo. So this is the length and breadth of wide connectivity. Certainly in our air service agreements, we only give connectivity to 6 metros in India, because in response we hardly get 1 or 2 points of call in those countries. So certainly we cannot open up our country to them. We must also strengthen our Indian carriers, the concept of Atmanirbhar Bharat, and I'm very pleased to report to this House that now our Indian carriers are getting wide-bodied aircraft. We are going to go long haul. We are going to put our Indian flag across the world in terms of direct connectivity. And I have great confidence in our Indian carriers to be able to provide that service, and certainly Punjab will be a very key element of that. थैंक यू। सेकंड सप्लीमेंट्री माननीय संजीव जी। Sir, my question was particularly regarding Canada, but anyway, my second supplementary is, my question to Honorable Minister is, when will Udan flights start again to Punjab, which were stopped before COVID? Now, why this has connection with Canada? Thank you. No, let me explain, sir. Why Be this brief, has, sir. Why this has connection with my earlier question? I am just telling you that. Please allow You me. come to the next question, please. No, this is next question. Yes, put it. So if the Udan flights are restarted after COVID, at least the people coming from Canada and other countries, they will have connecting flights. So they were closed during COVID and they have not been started, especially Please Ludhiana. be brief in your Thank question, you. Mr. Arora. Next question. Please, thank you. माननीय मंत्री। Sir, as we, very important suggestion for action as well as a point by the honourable member, and let me apprise him that Amritsar has and Chandigarh both have tremendous connectivity throughout India. We have domestic connectivity, and as far as the Udan flights are concerned as well, sir, the Udan flights are functioning, which had been given. Some of those flights post 3 years are no longer functioning, but we are awarding new routes under Udan 4.2 as we speak. Thank you. माननीय भुवनेश्वर कलिता जी, question relates to India and Canada flight. Yes, I will be on that point, Please. sir. My supplementary arises from the Honourable Minister's reply, where he says the Indian airlines are allowed unlimited direct connectivity from any point in India, including Amritsar and Chandigarh, of course. So my supplementary to Honourable Minister is whether Indian Airlines flights will
give connectivity to Guwahati Airport, which is the only major airport. This in question North Eastern relates region. to, Yes, sir. relates to India and Canada, please. But my supplementary arises from the reply of the minister, and whether any Indian Airlines flight will be introduced from the Guwahati Airport, Thank which you. is the Thank you. only major Thank you, airport in thank you, North Eastern Kalita ji. region. Thank you. Thank you, I put your question. Sir, as we are aware, sir, the civil aviation sector is a deregulated sector, and the decisions are made by the airlines based on their possibilities of passenger load factor as well as economic issues. If the member comes and meets with me and has a cup of tea or coffee with me, we can discuss it, and I will certainly pursue it. Thank you. Dr. V. Sivasan. So question is for Canada. Yes, Canada and Yes, sir. India and Canada. Sir, Please. Canada and Kannur same. Sir, now in India, air travelers are facing huge problems. No, many kind of problems. First one, skyrocketing fare of air travelers. So these airline companies are exploiting the common people in different ways. So they are exploiting the people without any norms and regulations. Here my question is, sir, in India some sectors, they are charging for a short journey, they are Thank you. charging Thank about you. 25,000 rupees, Thank sir. you. So here the question is, Thank you. doesn't the government Thank that you, Dr. V. Sudasan some ji. sort Please. of regulations Please. is needed to bring Please. a method into this Dr. V. madness? This is my Sivasan ji, question, please sir. cooperate This is the chair. ये हाउस ने रूल्स बनाए हैं कि संबंधित सवाल से संबंधित ही सप्लीमेंट. Please, 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 please. Let me move to. Perhaps माननीय मंत्री जी अगर जवाब देना चाहते हो तो आप दें. Yes, sir. Please. So I would want to respond, sir, because I think it's Please. the member's right to ask a Please. question, and it's my responsibility to respond to the members. Please. Sir, I think it's extremely important to understand that the civil aviation sector is a seasonal industry. There are crests and there are troughs. When festive season starts in October, all the way up till February is the high season of civil aviation. You then get into a little bit of a medium lull situation, and then the trough, which is the monsoon season, is really a wipeout season in terms of civil aviation is concerned. So there will be, because of seasonality factors, there will be pricing differences. Point number one. Point number two, sir, we also have to understand that the civil aviation sector has gone through possibly the worst time of any industry in the world during COVID. It was the only industry in which our planes were pretty much on the tarmac for almost 18 to 24 months. And the very fact that we've experienced a V-shaped recovery speaks great volumes of the resoluteness of our carriers and the capability to supply that service to our common man. ATF, which is a very important ingredient as a raw material, air turbine fuel, almost close to about 50% of a carrier's cost structure, has gone up from pre-COVID between 35,000 to 40,000 rupees a kiloliter to today's level of 1,17,000 rupees a kiloliter. So there's been almost a 2.5x jump in the main raw material in your cost structure, which comprises of almost 50%. That too has an effect on fares. And finally, sir, the civil aviation sector functions on what is called as a reservation bucket designator, RBDs, where if you book very far in advance, you will get very, very low fares. But as the plane keeps filling up, the fares certainly do go up, and that is an international practice that is followed all across the globe. Thank you, Professor Manoj Kumar Jha. Professor Manoj Kumar Jha. माननीय उपसभापति महोदय, मैं पहले ही माफी मांग लूं इससे पहले कि आप कहें, ये प्रश्न संबंधित है माननीय मंत्री जी की मौजूदगी से, सवाल से संबंधित नहीं है। मेरा आपके माध्यम से कहना, माननीय मंत्री जी, आजमगढ़ में एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के क्रम में हजारों किसान अपनी जमीन ना देने के लिए 2.5-3 महीने से बैठे हुए हैं, उनके साथ कोई संवाद नहीं हुआ है। आप कोशिश करें संवाद हो और रिजॉल्व किया जाए। धन्यवाद। शुक्रिया। सुझाव है, माननीय मंत्री पर निर्भर करता है कोई जवाब देना चाहे। अध्यक्ष महोदय, जरूर साहब आएंगे और हमसे मिलेंगे, हम जरूर बैठ के तहकीकात करेंगे। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 123, माननीय श्री धीरज प्रसाद साहू। माननीय धीरज प्रसाद साहू। हाँ, माननीय मंत्री जी, क्वेश्चन नंबर 123 पहला सप्लीमेंट्री, माननीय धीरज जी। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल के स्तर पर तथा बोकारो स्टील बर्नपुर एलायंस दुर्गापुर चंद्रपुर
से समिति सदस्यों का चयन सेल कर्मचारियों के बीच नहीं करने की वजह क्या है? माननीय मंत्री जी। सर, हमारे 8 संयंत्र हैं और इन 8 संयंत्रों में से कई संयंत्रों में हमारे यूनियंस और मजदूर संघ रजिस्टर्ड और एफिलिएटेड हैं, कई में नहीं, और इसका कारण मैं हमारे सांसद महोदय के समक्ष भी रखना चाहता हूं। भिलाई स्टील प्लांट पे भिलाई इस्पात मजदूर संघ एक रेगनाइज्ड यूनियन है। रूरकेला स्टील प्लांट में रूरकेला श्रमिक संघ इंटक के साथ जो एफिलिएशन रखता है वो उसे मान्यता मिली है। सेलेम स्टील प्लांट में सेलेम उरुकाल थोजिलार मुनेत्रा संगम LPF को मान्यता मिली है, और VIS विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट में VISL वर्कर्स एसोसिएशन को मान्यता मिली है। इसके अतिरिक्त सर 4 ऐसे हमारे संयंत्र हैं जहां मान्यता नहीं मिली है। दुर्गापुर स्टील प्लांट में क्योंकि वहां चुनाव आयोजित नहीं किए गए, क्योंकि वहां एक विषय पर आदान प्रदान भी है और एक सब जुडिस मैटर भी है, और यही स्थिति बोकारो स्टील प्लांट की है, जहां बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन को मान्यता दी गई थी, पर अब एक मैटर सब जुडिस है, लीगल मैटर हो गया है, इसलिए वहां चुनाव नहीं हो पाए, और यही स्थिति इसको में है और एलॉय स्टील प्लांट में। धन्यवाद माननीय मंत्री। सेकंड सप्लीमेंट्री माननीय धीरज जी। बोकारो इस्पात संयंत्र बनपुर दुर्गापुर चंद्रपुर फेरो एलाय प्लांट में 1947 और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1957 के प्रावधानों के तहत सीक्रेट बैलेट इलेक्शन के आधार पर समिति सदस्यों का चुनाव क्यों नहीं किया जा रहा है? धन्यवाद। जैसे मैंने आपसे निवेदन किया था और आपके द्वारा माननीय सांसद जी को भी निवेदन किया था कि ये मैटर सब जुडिस है, क्योंकि वहाँ लीगल केसेस चल रहे हैं, तो इस पे हम लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते। धन्यवाद। माननीय GVL नरसिम्हा राव। Thank you, sir. Sir, this is about executive and non-executive employees working in RINL, Visakhapatnam Steel Plant, sir. Among the 5,200 executives working, about 300 are retiring every year. Similarly, among 10,000 non-executive members working in Visakhapatnam Steel Plant, about 900 are retiring every year. And since 2019, there has not been any recruitment. So also there is a freeze on promotions and increments for employees, which has a very limited cost to the company, sir. So my request to the Honorable Minister, whether he will examine all these factors and try and lift the freeze on both freeze on recruitment and also provide increments as demanded by the employees. Thank you, sir. माननीय मंत्री जी। Sir, according to the rules, sir, there has to be a level of profitability for the past 3 years before the increments are given with regard to CPSUs. And this is the reason, as an example, I'd like to inform the honorable member, sir, that in the first 3 years, as far as sale is concerned, 14, 15, 15, 16 and 16, 17, because of it was making losses, therefore that wage revision could not take place for executive or non-executive. In the last 3 years, SAIL has become a profit-making company, and therefore we have executed the wage revision, increase in wage revision, both for executive and non-executive employees. The question very clearly is on SAIL. We have put in place, as I mentioned, across all CPSUs. The current question is on SAIL. As far as RINL is concerned, it will have to be seen whether it comes under this clause of 3 years profitability. If it does not, then certainly that wage increase at this point, according to the rules, cannot be given. धन्यवाद माननीय मंत्री जी। दोला सेन जी। डिप्टी चेयरमैन साहब, आपके माध्यम से हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि why memorandum of understanding not yet signed for SAIL workers wage revision at RINL 2, and as there are lacks of huge of workers beyond the central trade unions, why the central SAIL management do not restructure the NJCS committee considering the objective reality, and whether the central government and ministry has done any survey to know
how many vacancies there in the PSUs like SAIL, Thank you, how Dona to ji. fill it, and Thank why you. the overqualified numbers Thank are you. applying for jobs in government Thank departments. you. You have put two questions, please. Thank you. Sir, the honorable member has raised two very pertinent issues. One is regarding the fitment process as well as the salary revision and the resources being given to our workers. I'd like to inform her through you, sir, that as far as SAIL is concerned, we have actually signed the MOU with regard to executive employees as well as non-executive employees, both with regard to the new fitment. And I'd like to inform her through you as well, sir, that as far as the non-executive employees are concerned, it's been a 5-year cycle. The 2 cycles ago in 2007, wage revision was executed, then in 2012, and now as of 2017, the wage revision is being executed. But as far as the executive employees are concerned, it's only been done once in the last 10 years. So there's a 10-year cycle for executives, but a 5-year cycle for non-executives. And as far as we are concerned, at this point of time, 667 crores have been already dispersed to 11,000 executive employees, and 1,000 crores has already been dispersed to 56,000 employees of SAIL. So that has already been in place. The second question she raised is with regard to the composition of the NJCS. Through you, I'd like to also inform her, sir, that we have 12 representatives from our PSUs, 2 from SAIL and 1 each from Bhilai ISP, Bhilai, Rourkela, Durgapur, Bokaro, ISP, ASP, SSP, VISP, CFP, as well as the Director of Personnel or RINL. And as far as our unions are concerned, there are almost 25 representatives. So the weight is given to the workers and to the unions. 3 representatives each from INTUC, C2, ITUC, HMS and BMS, and 1 representative each from the unions of Bhilai, Durgapur, Rourkela, Bokaro, Burnpur. And as far as the SSPs are concerned, 1 rep each from Durgapur, Salem, our Bhadravati, Chandrapur, Fero, as well as RINL. Thank you. Maanनीय Honorable P. Bhattacharya ji. Sir, I have a very pertinent question. For increasing the quality of the production, all the steel factories in the country, whether government has any planning of start any tripartite discussion with the central trade union leaders. Thank you. Steel production in the country has increased at a historic level. In 13-14, we had only close to about 60 million tons per annum production of steel. We are today at 120 million tons. In terms of capacity, we had only 75 million tons. We are today at about 154 million tons. So there's been a doubling in the last 8 years of steel production in the country, which has been historic, and which is why we've become the 2nd largest steel producer in the world today, sir. It's very important that India, the second point I'd like to make is very important that India continues on this trajectory of growing capacity of steel production, because we have a tremendous amount of infrastructure projects. And therefore, it is our target that by 2030, we intend to double our steel capacity from 150 to 300 million tons. SAIL 2 will be a part of that. SAIL's current capacity is 19.6 million tons. We're going to grow SAIL's capacity to 33 million tons by 2030, and Bokaro Steel Plant's capacity is 4.6 million tons, which will go to 8.6 million tons. Thank you. Question number 124, Srimati Ranjit Ranjan ji. Question number 124. Thank you. Maanनीय Mantri ji. Sir, statement is laid on the table of the House. First supplementary. सर उप सभापति जी, आपके माध्यम से मैं मंत्री साहब से पूछना चाहती हूं कि अगर आप देखें तो जो कोयला खदानें अभी विकसित हो रही हैं, उनमें से कम 165 गांव को विस्थापित करने और लगभग 87,630 परिवारों को प्रभावित करने का खतरा है, जिनमें से 41,508 परिवार उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां प्रमुख आबादी आदिवासियों की है। इसमें लगभग 22,686 हेक्टेयर कृषि की भूमि और 19,287 हेक्टेयर जंगल को भी खतरा है। ऐसे में देश की खदानों में हम सिर्फ 2/3 क्षमता का उपयोग कर पा रहे हैं
कुछ बड़ी खदानों में सिर्फ 1% ही छप्ता का उपयोग हो रहा है। क्योंकि मैं आपके आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो नई खदानों में हमारे लाखों आदिवासी भाइयों, सर उसी में आ रही हो, इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी जल, जंगल, जमीन, रोजी रोटी का सवाल है। मेरा मंत्री जी से सवाल है कि आज जो मौजूदा खदानें हैं उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए मंत्रालय ने क्या कदम उठाए? धन्यवाद। Sir, basically, I do not agree the so-called report what she is mentioning. That report is neither credible nor reliable. See, that has calculated on the basis of जो कोल इंडिया और हमारा PSU के पास जो हमारे कोयले के खदान है उसके लिए कैलकुलेट किया है 328 लगभग हमारे पास 328 माइंस है इनटू PRC। तो PRC सभी इसमें अचीव नहीं होता है जी। PRC कभी कभी वेदर के कारण, लैंड एक्विजिशन कारण, नॉन वायबिलिटी के कारण, फॉर द वेरियस रीजन, एंड कभी कभी PRC अचीव ही नहीं होता है। तो इसके कारण ये जो कर रहे हैं, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल रिपोर्ट। And on the basis of that, because ultimately it is the question of the energy security of the country, हमको हमारा energy security को देखना है। And जहाँ तक सवाल है हमारा, जहाँ तक सवाल है प्रोडक्शन का जो सवाल है हमारा प्रोडक्शन था इन 14, it was 566 million ton। इस बार हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, दिस ईयर आवर टोटल प्रोडक्शन विल बी 900 million ton। दैट मीन्स ऑल आवर PSUs they are using optimum, they are producing to the optimum level। For example, Coal India average is around 85%, ACCL is around 90%, and Neyveli Lignite Corporation, where we have given them the coal mines also and including lignite, there is almost nearly 100%. So in last and our requirement by 2030 will be 1,500 million ton. For that we have to scale up our production. For that the previous regime, they did not produce. There was only scams, and today we are producing and we are ensuring the energy security for India. For that coal is needed. That is what I would like to mention. And that report which they are mentioning, it is neither credible nor reliable. I am very clear on this. Thank you. Second supplementary, रंजीता जी। सर उनसे रिक्वेस्ट करिएगा, मैं उनको ऑथेंटिक डेटा लाके दूंगी। मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री है, 2021-22 में भारत का कोयला आयात 208.93 मिलियन टन था, जिसकी कुल कीमत 2.28 लाख करोड़ रुपए हुई। वहीं 7 सितंबर महीने तक कोयला आयात करीब 132 मिलियन तक पहुंच गया है, जिसकी कीमत 2.3 लाख करोड़ पहुंच गई है। तो मैं आपकी सरकार से, आप आत्मनिर्भर भारत की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आज भी इतने बड़े स्तर पर कोयला का आयात कर रहे हैं। क्या मंत्री जी बताएंगे कि भारत में कोयले के मामले में कब तक, किस साल तक हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे? दूसरा, इसके साथ ही है, हाल ही में एक रिपोर्ट आई है। सर मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ। हाल ही में सर मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ। एक ही 2 साल में एक तो क्वेश्चन आता है सर। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें माननीय मंत्री जी प्लीज, नो नहीं, एक व्यक्ति 3 सवाल नहीं पूछ सकते। हमारे पास और नाम है, माननीय सदस्य जिनको मौका नहीं मिलता, आप मेरे पास आते हैं, अगर एक व्यक्ति 3 सवाल पूछेंगे प्लीज। सवाल आप 3 पूछेंगे एक साथ नहीं, प्लीज प्लीज। सर जो बड़े बड़े बातों के बारे में बात नहीं, दिस इज योर थर्ड कर रहे क्वेश्चन, बी क्लियर। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ओनली 2 सप्लीमेंट्री रंजीता जी। जो छोटे छोटे बात करते थे, इनका प्रोडक्शन क्या था? इनका प्रोडक्शन था 566 मिलियन टन। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप 2 क्वेश्चन पूछ चुके हैं, प्लीज माननीय मंत्री जी। आई एम रिप्लाइंग, इफ ही अलाउज आई विल रिप्लाई। प्लीज नहीं, आई विल नॉट, प्लीज आप जवाब दें सर। आप जवाब। जो बड़े बड़े बातों के जिक्र कर रहे हैं, हमने बात नहीं किया है, बात तो हमने जो किया है हमने करके दिखाया। माननीय सदस्य, आपको 2 सवाल पूछने का मौका है, आप 3 सवाल पूछ रहे हैं। नो, आई विल नॉट अलाउ, आई विल नॉट। प्लीज प्लीज प्लीज
Nothing is going on record. No. Please briefly आप मंत्री जी जवाब दें. I will move to it. Please. Please. आप briefly जवाब दें. Please. Please. Sir. Please. आप माननीय मंत्री जी प्लीज. माननीय मंत्री जी प्लीज जवाब दें आप. I will move to now. I will move to other question now. सर के कांग्रेस पार्टी का प्रॉब्लम है सर. Please. They do not have trust on our agencies. They do not have trust on our army. They do not have trust on our institutions. मंत्री सवाल को जवाब दें. Please. This is the situation. They are trying to rely on a report. माननीय मंत्री जी प्लीज जो एक विदेशी संस्था माननीय मंत्री जी प्लीज जो एक विदेशी संस्था एक रिपोर्ट करती है और वो रिपोर्ट में ये कहती है हमारा जो खजाना है उसका पूरा उपयोग नहीं होता है, तो हम ये कह रहे हैं, हम नए दावे के साथ कर रहा हूँ, हम स्टैटिस्टिक्स के साथ कह रहा हूँ. Sir, I will complete, sir. This is a very important question she has raised. Please complete. And whatever she has raised, I have already told. Average 90% from each of the mine. We are utilizing almost 90% of its capacity. Thank you. And sir. Thank you. And our production will be 900 million ton. And next year it will be 1 billion ton. Thank you. Sir, let me complete, sir. During that time, it was the Koila was under this regime of scam. Our regime under the Prime Minister Narendra Modi ji, I would like to assure this house, sir, let me last sentence. I will assure house from 24-25, who will start the import of the thermal coal. This is what I am going to assure to this house. माननीय कृष्णलाल पवार, Dr. Sasmit Patra, please. Honorable Deputy Chairman, sir, thank you for giving me this opportunity to ask a very specific question on Odisha, sir. Sir, I'd like to first thank the Honorable Minister that today Odisha is one of the largest states which is producing the most of coal in the country. And Mahanadi Coalfields is also doing a tremendous job in Odisha. Sir, I'd like to know that in terms of Odisha, what are the specific plans, programs that the Honorable Minister has in terms of maximizing capacity, utilizing capacity of coal in the state of Odisha so that that becomes the largest coal bearing and coal extraction state in the country. धन्यवाद. Sir, I am thankful to Honorable Member Shri Sasmit ji because the Odisha, they are by and large they are cooperating as far as both other mining sector also and the coal is also. And I would also like to, we had a long discussion with the Odisha government as far as the mining is concerned and coal mining is also concerned. Many suggestions we received from them. After receiving those suggestions and having a lengthy discussion with them, we have also changed certain things and they have also changed certain things, the process in the state of Odisha. By that, overall the production, which was around 60-65 million ton in 2014, today it has almost reached 170 million ton. And I am going to assure Mahanadi Coalfields in coming a year or two, maximum a 1.5 year, we are going to achieve 200 million ton per year. This is the plan we have, and the detail I will share with you because this is royalty will increase. And the royalty, entire royalty, whatever, and also I would like to tell, sir, during the previous region, it is given an allotment through a chit route, means by a slip route. Now we are auctioning it. Most transparent system of auction. पहले कौन सा ऑफिस से चिट्ठी आता था और किसको अलॉट होता था ये सबको पता है, इसलिए स्कैम बन गया. वो स्कैम के कारण सर अभी क्या हो रहा है, अभी हम ट्रांसपेरेंट सिस्टम में ऑक्शन कर रहे हैं और ट्रांसपेरेंट सिस्टम में ऑक्शन के कारण स्टेट का रेवेन्यू बढ़ रहा है. ये स्टेट का रेवेन्यू बढ़ रहा है, स्टेट स्ट्रेंथन हो रहा है. स्ट्रेंथन होने के कारण ये लोगों को बहुत इनको थोड़ा तकलीफ हो रहा है क्योंकि भारत आत्मनिर्भर बन रहा है. थैंक यू. माननीय नीरज डांगे जी, माननीय नीरज डांगे,
your question. माननीय नीरज गांधी, आपका सवाल. Thank you, Chairman, sir. Through you, sir, I would like to ask Honorable Minister of Coal that nearly 90% of the proposed coal projects in terms of capacity will be located in the high-risk water zones, which will worsen the water shortages in the region. What steps will the government take to mitigate the potential water crisis due to new coal projects in these regions? Thank you. Thank you, sir. I may be kindly allowed to speak in detail, sir. Environment impact assessment and EMP is also prepared on each project based on the project-specific terms of reference recommended by Ministry of Forest and Environment Clearance, which requires a detailed hydrology and hydrogeology impact assessment management plan based on which EC is granted, sir. Subsidiaries of the CIL are in a process of obtaining no objection certificate for abstraction of the groundwater for each of the product from the central government water authority, Ministry of Water Resources of Government of India. Advance payment of fee is ensured for each project for abstraction of the groundwater. Clearance is granted based on the detailed hydrological report and the groundwater. तो इसीलिए ये सब हम जो करते हैं, इसके साथ ही साथ जो माइन करने के बाद पानी निकलता है, वो पानी एक तो हम हमारे माइनिंग के लिए ही यूज करते हैं, और उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं CIL के देता हूं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द CIL इज टू अटेम्प्ट द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द माइन वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम द फॉर द कम्युनिटी यूज. In 2021 and 2022, out of the total 6,440 some LCQM average mine water discharge, 2,591 LCQM of mine water was utilized for own use and 2,826 LCQM water was utilized for the community supply. That is for some is potable and some is for irrigation and some is for plantation. Thank you, Mantri. Means the entire water is used, and also plantation is being done, and also we are taking the permission from all the concerned authorities so that there will not be impact of the water on the concerned area. Thank you. Saroj Pandey ji. धन्यवाद उपाध्यक्ष जी. मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जो कोयला खदानों का परिचालन होता है और जो राज्यों में स्थापित है, उन राज्यों में जो केंद्र सरकार के अधिकारी होते हैं, उन अधिकारियों पर राज्य सरकार द्वारा अनाधिकृत तौर पर उन पर दबाव डाला जाता है और अनैतिक कार्यों के लिए जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में अभी लगातार ये घटनाएं हो रही हैं, तो वहां पर मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूं कि छत्तीसगढ़ में जो घटनाक्रम अभी घटित हुआ है कोयला के खदानों को लेकर और जिसको लेकर बार-बार ये विपक्षी दल उद्वेलित होते हैं, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि छत्तीसगढ़ खदानों का क्या विषय रहा है. प्लीज सर, तो दबाव डालने का इधर-उधर कोशिश तो होता है, लेकिन कई स्टेट में तो ऐसा होता है. प्लीज, लेकिन भारत सरकार इसमें स्पष्ट है. प्लीज हम प्लीज तो लेकिन मंत्री जी आपकी जहां भी ऐसे कंप्लेंट आता है, भारत सरकार इसके एकदम सख्तता से कार्रवाई करते हैं. इसके साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूं, द टोटल जो सिर्फ हमारे PSU के साथ था कोयला प्रोडक्शन, उसके कारण हमारा टोटल प्रोडक्शन नॉट इवन it was sufficient for the 50% of the requirement. Now because we have completely stopped, the scam regime has been totally stopped. तो ये स्कैम रिजिम बंद होने के कारण टोटल हम ट्रांसपेरेंट सिस्टम से ऑक्शन करके प्राइवेट लोगों को लाके, प्राइवेट लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व करके देश का जो नीड है, एनर्जी रिक्वायरमेंट है, कोयला का रिक्वायरमेंट हम पूरा करने जा रहे हैं. इसीलिए नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट which believes in transparency and we believe in that and we are committed to that. Thank you. Question number 125, Honorable P. Sri Santosh Kumar P. Question number 125. माननीय मंत्री जी. Table, sir. First supplementary. Sir, there are around 40% of the Hajj pilgrims are from northern side of Kerala only.
Sir, the government of Kerala already demanded to make it a Hajj embarkation center. And you might be knowing that there are 8 members of parliament from the same district, including the minister who is sitting next to you. So my question is that will it be operational by 2023? I mean the Hajj embarkation center in Kannur Airport. Thank you. Sir, as far as the Hajj embarkation is concerned, sir, we are not the nodal ministry. The nodal ministry is the Ministry of Minority Affairs. Based on the decision that the Ministry of Minority Affairs takes with regard to Hajj embarkation points, that decision is notified to us, and we are only the operational side in terms of providing the necessary processes. If the honourable member can certainly raise this issue with the Minority Affairs, and if he so likes, I can also pass it on from his side to the Ministry of Minority Affairs. Thank you. Second supplementary. So as it is described now, there is a detailed picture of the Kannur Airport. So I would like to ask you one question. Sir, it is up to the airlines to provide air services to and from any airport in the country depending on their operational and commercial viabilities. So this means now airfares are being determined by the companies. Now the operations are also being decided by the companies. So this will lead to total catastrophe. All these airports have spent crores of rupees, and if the government is not going to intervene in this issue, this will be a serious loss to the nation. So I request you to change the policy. Is there any chance of changing your policy? Thank you. So the whole concept of deregulating a sector means you allow for market forces to decide. Now, the honourable member is asking the question whether we need to re-regulate a sector that we have deregulated. I certainly believe, sir, that the airlines are providing a yeoman service in terms of contributing to the transportation sector in our country. I can very well understand the honourable member's concern with regard to connectivity, and I would like to apprise him that as far as Calicut is concerned, we have 332 air traffic international movements to almost 14 cities. As far as Kochi is concerned, we have 564 air traffic movements per week to 16 cities. As far as Kannur is concerned, we have 130 air traffic movements to almost 11 cities. Thiruvananthapuram, we have 220 air traffic movements per week to almost 13 cities. Thank you. Please. राम भाई मुकेरिया, ये सवाल सिर्फ कन्नौर कालीकट एयरपोर्ट का है, इससे आपका संबंधित सवाल है? पोरबंदर का है। प्लीज नहीं, तो मुझे अगले सवाल पे जाने दीजिए क्योंकि बहुत धीमी गति से बढ़ रहे हैं। प्लीज, डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल। एयरपोर्ट्स के ऑपरेशंस पर नहीं, आपका सवाल कन्नौर कालीकट एयरपोर्ट से संबंधित है? नहीं, हमारा एक आदमपुर पंजाब में एयरपोर्ट है और उसमें से 4 बंद पड़ी हुई है, उसमें से 4 बंद। नो प्लीज लेट मी। सर, इसके उत्तर में उड़ान और रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम का जिक्र किया गया है, तो उससे संबंधित आपका कन्नौर कालीकट से जुड़ा सवाल है तो मैं मौका देने को तैयार हूं। हरियाणा के एयरपोर्ट से जुड़ा तो प्लीज बैठे। क्वेश्चन नंबर 126, श्रीमती ममता मोहंता। For 126. प्लीज, माननीय मंत्री जी। Sir, answers laid on the table of the House. फर्स्ट सप्लीमेंट्री। धन्यवाद वाइस चेयरमैन सर। आरसीएस उड़ान के चतुर्थ पर्याय के अधीन में 2020 में देश के रिमोट और रीजियोनल स्थान में कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए 78 नया रूट को अनुमोदन किया गया था। सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को पूछना चाहती हूँ कि ये नया रूट में ओडिशा के कोई सेक्टर शामिल है या नहीं? अगर नहीं है तो क्या कारण है, और क्या सरकार कोई नया रूट प्रस्तुत कर रहे हैं? थैंक सर, जहाँ तक उड़ीसा की बात है सर, वी हैव 22 ऑपरेशनलाइज्ड रूट्स वर्तमान में, और हम लोगों की कोशिश है कि आने वाले समय में 16 ऐसे रूट्स हैं जिसमें से 14 रूट्स में हमारे 2 एयरपोर्ट अभी जल्द तैयार होने वाले हैं, और 2 रूट्स के लिए एयरलाइन अभी वो रूट्स चला नहीं पा रही है। लेकिन हमारी कोशिश है कि आने वाले अवधि में भी उड़ान 4.2 के तहत 184 रूट्स हम लोग ने अधिक दिए हैं, जिसमें से करीब 16 हेलीकॉप्टर रूट्स हैं, 50
हमारे सी प्लेन रूट्स हैं और करीब 119 हमारे फिक्स्ड विंग के रूट्स हैं और आने वाले समय में भी उड़ीसा को हम लोग प्राथमिकता जरूर देंगे। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री। सी उड़ान योजना के अंतर्गत कितने एयरपोर्ट कवर हुआ है? क्या इस योजना का और विस्तार करने का कोई योजना है? अगर है तो कौन सी राज्यों के कितने ट्राइबल जिला में इस योजना को लाभान्वित करेंगे? सर, उड़ान योजना एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है भारत सरकार की और प्रधानमंत्री की यह महत्वाकांक्षी योजना है कि उड़े देश का आम नागरिक। और इसी योजना के तहत पिछले 6 वर्षों में 2016 में इसकी शुरुआत हुई। करीब 2,15,00,000 नए फ्लाइट्स उड़े हैं सर, और इसके साथ 1,15,00,000 लोग जिन्होंने कभी भी प्लेन में सफ़र नहीं किया हो, केवल खेत में खड़े होकर प्लेन को देखा हो, ऐसे लोगों ने सफ़र किया है सर। तो ये उड़ान योजना की महत्वपूर्णता है देश की विकास और प्रगति में। और 11 एयरलाइंस इसके भाग हैं, जिसमें से 3 नए स्टार्टअप्स भी हैं। 70 नए एयरपोर्ट बने हैं सर, ऐसे जगह में जहां एयरपोर्ट द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्ण रूप से मिटाए गए थे, वहां एयरपोर्ट स्थापित हुए हैं, चाहे वो दरभंगा हो, रूपसी हो, किशनगढ़ हो। अनेक ऐसे स्थान हैं जहां 15,000 से 2.5 लाख से 3.5 लाख यात्री प्रतिवर्ष आज उन एयरपोर्ट से सफ़र कर रहे हैं। और आने वाले सालों में जो 70 एयरपोर्ट्स हमारे बने हैं, उसके अतिरिक्त हम लोग 68 नए एयरपोर्ट्स बनाने जा रहे हैं 2024 के अंत तक, ताकि एक विस्तृतीकरण नागर विमानन का क्षेत्र का हो और एक गहराईकरण भी नागर विमानन क्षेत्र का हो। रजनी पाटिल जी। धन्यवाद सर। उड़ान स्कीम के अंतर्गत अभी मंत्री महोदय ने सब जानकारी दी थी। मैं आपके द्वारा पूछना चाहती हूँ कि टियर 2 और टियर 3 शहरों में जहाँ पर ऑलरेडी एयरपोर्ट्स मौजूद है, जैसे कि हमारे महाराष्ट्र में नांदेड़, वहाँ पे विगत 2-3 साल से हवाई सेवा चालू नहीं है। तो जो जहाँ पे लागत गवर्नमेंट की लगी है, पैसा लगा है सरकार का, वो तो बंद है और हम नए शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या इसके लिए सरकार कुछ करेगी? धन्यवाद। नांदेड़ में हमने फ्लाइट कनेक्टिविटी की शुरुआत की थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वो एयरलाइन ने वो रूट बंद कर दिया है। हमारी कोशिश है और आने वाले उड़ान 5.0 में भी हम नांदेड़ को जरूर प्राथमिकता देंगे, क्योंकि नांदेड़ एक ऐतिहासिक स्थान है, केवल महाराष्ट्र के दृष्टिकोण से नहीं लेकिन राष्ट्र के दृष्टिकोण से हमारे सिख समाज के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और प्राथमिकता हम जरूर देंगे, ये विश्वास में। धन्यवाद। श्रीमती कांता करदम जी। धन्यवाद सर। सर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ, माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या इस योजना के तहत चालू हवाई अड्डों की संख्या में वृद्धि हुई है तथा उड़ान तहत प्रचालित RCS मार्गों एक सवाल पूछ और चुकी हैं हवाई कांता अड्डों जी, का एक सवाल हो चुका आपका, सहित प्लीज राज्यभर विवरण क्या है? प्लीज धन्यवाद एक ही सर। सवाल माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हमारे भारतवर्ष में 2013-14 तक केवल 74 हवाई अड्डे स्थापित थे और इन 8 वर्षों में प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता के आधार पर आज 71 नए हवाई अड्डे, वाटर एयरड्रोम और सी ड्रोम हमारे स्थापित हो गए, 145 स्थापित हो गए। और सदन को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले 5-6 सालों में जो ये 74 से हमारी सफ़र रही है 145 तक, ये सफ़र जारी रहेगी और 200 का आंकड़ा हम लोग पार करेंगे, ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं। और इसी के साथ जहां हम लोगों के प्लेन की फ्लीट की बात है, जो केवल 400 तक सीमित थी 2013-14 पे, वो आज 700 पर आ गई है और हर वर्ष 100 से 125 प्लेन्स की एक्विजिशन होगी और आने वाले 5 साल के अंदर 1200 की आंकड़ों को भी हम लोग पार करेंगे, ये विश्वास है। धन्यवाद। माननीय इमरान प्रतापगढ़ी। माननीय इमरान प्रतापगढ़ी। सर, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न है कि सरकार का नारा था कि चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी जो है वो हवाई जहाज का सफर करेगा। इन दिनों प्लीज आप सवाल हवाई सवाल समझ लें, पूछने कुछ दें भी इमरान समझ जी लें, को, हर चीज प्लीज। पे टोका टिप्पणी करना सर नहीं, प्लीज आप उनको भी मना करिए, सत्ता नहीं, मैं पक्ष को। सबको मना कर रहा हूं। मेरा अनुरोध यह है सर, और प्रश्न मेरा यह है कि इन दिनों जब भी थोड़ा सा यात्रा का अनुपात बढ़ता है, टिकट इतने ज्यादा महंगे हो जाते हैं कि कोई कंट्रोल नहीं रह जाता। 5,000 का टिकट 20-20, 25-25 हजार तक में बिकता है। तो क्या माननीय मंत्री जी के पास इस तरह का कोई इसको लेकर के उपाय है प्राइवेट एयरलाइंस को कंट्रोल करने का, कि कम से कम टिकट जो है वो सस्ता रह सके और आम यात्री जो है वो हवाई जहाज का सफर कर सके?
सर, मैं सांसद महोदय को सूचित करना चाहूँगा आपके द्वारा कि शायद इनके वायर्स क्रॉस्ड हो गए हैं। ये मिक्सअप कर रहे हैं उड़ान योजना और साधारण टिकटों के आधार पर। उड़ान योजना के तहत वायबिलिटी गैप फंडिंग के मैकेनिज्म के तहत सस्ते टिकट दिए जाते हैं ताकि उस रूट को हम लोग वायबल कर पाएं, और उसी के आधार पर 1 करोड़ 10 लाख लोग इस देश में हवाई सफर कर पाए हैं सर, जिन्होंने कभी भी कल्पना नहीं की थी। तो जहां तवज्जो दिया जाना चाहिए, मैं निवेदन करूंगा सांसद महोदय को, तवज्जो देनी चाहिए उनको। जहां तक उन्होंने विषय उठाया है कि टिकट के दाम बढ़े हैं, बिल्कुल सही कहा है इन्होंने, और इसका विस्तृत उत्तर मैंने पहले प्रश्न में कहा था कि हमारे सेक्टर में प्राथमिकता से 2 फैक्टर होती हैं। एक सीजनैलिटी की फैक्टर होती है, एक लीन सीजन होता है जहां टिकट के दाम कम होते हैं, एक हाई सीजन होता है जहां टिकट के दाम बढ़ जाते हैं। और ये केवल भारत में नहीं है, ये विश्व स्तर पे ये स्थिति होती है, और आज हम लोग वो हाई सीजन में चल रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, एक डेजिग्नेटेड बकेट्स होते हैं टिकट के। तो अगर हम लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं, अगर एडवांस में हम लोग बुकिंग करेंगे तो आपको लोएस्ट फेयर से भी कम मिलेगा डिस्काउंट पे, 2000-3000 पे। पर अगर आखिरी दिन पे हम लोग टिकट बुक करेंगे तो वो फेयर जरूर बढ़ जाते हैं। और तीसरा मुद्दा जो आपके समक्ष मैंने सर रखा था कि एयर टर्बाइन फ्यूल का कॉस्ट अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो 53,000 रुपए प्रति किलोलीटर था प्री कोविड, वो अब 1,17,000 रुपए प्रति लीटर हो चुका है वर्तमान के समय में, जो 50% हम लोगों की इनपुट कॉस्ट एयरलाइंस की होती है। थैंक यू।